Social class background of the teacher is the continuing topic of discussion. We see that the teachers of working class origin are to be found predominantly in the working class schools. ये बात पहले भी कही है, लेकिन this is so prominent that it comes again and again कि वर्किंग क्लास origin के टीचर जो हैं वो मोस्टली आर फाउंड इन द वर्किंग क्लास स्कूल्स, यानी वो स्कूल जो जो कि लोकेटेड हैं इन द वर्किंग क्लास के जो मोहल्ले हैं वहाँ लोकेटेड हैं। अलबत्ता एक पैटर्न ज़रूर नज़र आता है कि ये लोअर क्लास के जो स्कूल में जो टीचर्स लेट्स से स्टार्ट करते हैं, दे मूव ऑन टू लेट्स से मिडिल क्लास schools which are located in the middle class and the others. तो ये एक पैटर्न हमें नज़र आता है कि moving from the lower class school in which teaching begins to a school with a higher proportion of middle class peoples. ये ऐसे भी बात हो सकती है कि पहले चूँकि नौकरी लेनी है तो नौकरी के लिए जहाँ भी मुलाजमत मिली आपने वो ले ली, और वो मुलाजमत हमें मिल रही है कहाँ, जो डिप्राइव्ड एरिया में है, और डिप्राइव्ड एरिया में लोग नहीं जाते हैं, और बाज़ी सर्विसेज में इस किस्म की कंडीशन लगाई जाती है कि शुरू के जो इतने साल हैं आपने या इतना पीरियड है आपने फलां किस्म के इलाके में आपने गुजारना है। ये एजुकेशन के लिए भी हो सकती है और प्रोफेशन के लिए, हेल्थ वालों में भी इस किस्म की बात आती है। सो टीचर्स इन schools where pupils are in the lowest socio-economic status come from the background which can be characterized as more urban, more blue collar, with less formal education, low incomes. So that is how we see the background of the teachers. लेकिन ये बात है कि कोई एक्सट्रीम हमें चीज़ नहीं आ रही। आप कह लें कि लोअर लेट्स से मिडिल क्लास है या अपर लो क्लास की बात आ रही है। तो इवन इन schools where the majority of the pupils were from low status families, the majority of the teachers had come from white collar homes. और उसकी एक वजह ये भी हो सकती है जो जिसका मैंने पहले कहा कि चूँकि जॉब वहाँ वैकेंसीज वहाँ हैं, इसलिए दे हैव टू एक्सेप्ट इट, ईदर इट इज़ ए कंडीशन या चॉइस नहीं है, कहीं और अवेलेबल नहीं है, लेकिन पहली अपॉर्चुनिटी में उनकी कोशिश होती है कि वो वहाँ से निकल जाएं और वो निकल जाते हैं। So the social origin of college and university teachers is to some extent governed by the social background of the college and university student. अब कॉलेज में लेटर से जो लोग जाते हैं आफ्टर हाई स्कूल, उनकी हम देखते हैं कि they are not, let's say, working class people. Mostly they are, let's say, other people or students coming from other classes, and particularly यूनिवर्सिटी लेवल पर, यानी वो लोग जो कि अफोर्ड कर सकते हैं to go to the colleges and the universities, and we see that this education is not free. College education is not free, university education is not free. Therefore we expect कि यहाँ पर वही लोग आएंगे जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, और लो क्लास के बच्चे हम नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। So this is likely to be predominantly middle class in character, even in countries like the United States. So teachers of lower social origin were less likely to be employed in top ranking universities. तो आमतौर पर मिडिल क्लास के लोग ही जाते हैं। So in Britain, university teachers have a higher social origin than those teaching in other forms of higher education. और इसी के बेसिस पे हम ये भी देखते हैं कि अगर टीचिंग प्रोफेशन या टीचर जो कि टीचिंग में हैं
उनमें देखें, रैंकिंग देखें, तो मे बी द कॉलेज प्रोफेसर एंड द यूनिवर्सिटी प्रोफेसर has a higher ranking compared with a teacher who is teaching at the high school level or at the, let's say, primary school level. So that is how there might be some correlation between the two factors. So the situation in Pakistan does not seem to be different. यही चीज़ हमें नज़र आती है पाकिस्तान में. We I couldn't find any specific information with this respect, but the general observation are the level of education and social class has a strong correlation. So lower education institutions used to have teachers with lower qualifications. ये जैसे कि मैंने पहले भी बात की कि अगर लोअर लेवल का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ टीचर जो है उसकी क्वालिफ़िकेशन भी लोअर लेवल की है, उसकी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन भी लोअर लेवल की है, और उसकी जो रेगुलर स्कूलिंग है वो भी लोअर लेवल की है. लोअर लेवल मीन्स के लेस नंबर ऑफ ग्रेड्स कह लें, या जिसको हम कहते हैं कम क्लासेस उसने पढ़ी हैं. मिसाल के तौर पर प्राइमरी टीचिंग सर्टिफिकेट, जिसको हम पीटीसी कहते थे, टीचर्स वर पोस्टेड द प्राइमरी स्कूल्स यूजुअली कमिंग फ्रॉम द लो क्लास फैमिलीज. क्योंकि अगर वो लोअर क्लास से नहीं है तो द चाइल्ड विल नॉट स्टॉप, लेट्स से, हिज और हर एजुकेशन एट द मैट्रिकुलेशन लेवल. वो आगे जाएगा. क्योंकि वो आगे जा ही नहीं सकता तो इसलिए किसी और तरफ चल पड़ा. इसी तरह सर्टिफिकेट ऑफ टीचिंग, जिसको हम सीटी कहते थे, वाज द हायर नेक्स्ट हायर ट्रेनिंग, जिसको हम भेजते थे लेट्स से मिडिल स्कूल में. सो सर्टिफिकेट ऑफ टीचिंग वाज द नेक्स्ट हायर प्रोफेशनल ट्रेनिंग फॉर टीचर्स. इसके लिए बेसिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो थी वो इंटरमीडिएट थी. तो बैचलर ऑफ टीचिंग, जिसको बीटी कहते थे, which was later on called as the B.Ed or Bachelor of Education, came next. इसमें बेसिक क्वालिफिकेशन जो थी वो ग्रेजुएट थी, ग्रेजुएट होना ज़रूरी था. और टीचर्स इस क्वालिफिकेशन के साथ हम देखते थे कि पोस्ट किए जाते थे हाई स्कूल में. मास्टर डिग्री वाज द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर पोस्टिंग एट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल. ओके, अब यूनिवर्सिटी लेवल पर भी, और यूनिवर्सिटी लेवल पर डेफिनेटली चेंज आ गई है. मास्टर लेवल की बात नहीं हो रही. मिनिमम इज़ एमफिल या फिर पीएचडी हम देखते हैं. तो ये हमारा जो हिस्ट्री है हमें ये नज़र आती है. सो देयर लुक्स टू बी ए कोरिलेशन बिटवीन द लेवल ऑफ स्कूलिंग एंड द मिनिमम लेवल ऑफ डिग्री required. So that is how we see the factors are there. So we see that if education is considered as a proxy for the social class, then at lower level of schooling, the teachers tend to come from lower class families. अगर हम इसको समझें कि दिस इज़ एन इंडिकेशन ऑफ सोशल क्लास, तो हम ये देख रहे हैं, हमें नज़र आता है कि लोअर क्लास की टीचिंग के लिए लोअर क्वालिफ़िकेशन की बात रही है. अब ज़रूर हम ये देखते हैं कि हमारी जो ऐसे पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि एट प्राइमरी लेवल एंड हाई स्कूल लेवल भी हम देखते हैं कि बीएड की क्वालिफ़िकेशन जो है वो कर दी गई है. वो पीटीसी और जो सीटी था वो ख़त्म कर दिया गया. तो दैट इज़ हाउ वी सी दैट सोशल क्लास हैज़ correlation with the qualifications of the teachers and the place where they are teaching.